빨리. I can't speak. Not selfie. It's a You, video. sir. Okay, so what's our plan? Say hi to Kunzang. 야 잠깐만. 비디오? Yeah. 아니야 지금 I 아니야. can Why edit. are you whispering? I can edit you out. Again. So this is our Kunzang again. We Our met. Kunzang. And he came today to our We're house. going to buy ingredients. Aloo Aloo dum and chapati and rice and rice. you like paratha? Yeah. Okay. Me too. We're gonna go to E-Mart. We're gonna buy something and then we're gonna have fun. And we are going to E-Mart. I hope it's open because it'll be sometimes open. yeah. Let's go back. So after E-Mart, we are going here. 동네 동네 아니야 동네만. 우리마트. 안녕하세요. Garlic. Tomato. Oh, you need to get the. Yeah. Okay, that's it? Yeah. 감자. 여기는 I'm excited. We are doing coriander. yeah and potatoes. Aloo ka paratha. Potato. No, aloo ka paratha. Did you wash the coriander? Yes. For aloo paratha. And this is dum aloo. Have you tasted? Yeah. But at least cut your coriander. Nice. Okay. Design. Presentation. This is my soft atta. I hope you will like it. The Punjabi style muffin. Me too. A whole new world. What? What are you saying? Oh, it looks like mandu. This one. Please stop it. You like your aloo ka paratha with achar, chai or what? Ketchup? Ketchup. Mm. No oil? Later. That's it. It's too much. Is it? Okay, whatever. Because I don't have ghee, that's why I'm not using too much. mandu. Yes. Momo, Indian momo. First paratha for Kunzang. 우와. 우리 소날비 울랄라. Aloo ka paratha. This is the aloo kapara. Oh, it looks so much better like this. Not now, Amazing. I know you are hungry, Kunzang. And then turn. Not now. Now. This is not done yet. 아니야. Yes, you did really bad job. 아니야. Done? Maybe press a little bit. Not like this. Not Down. like this? Yeah. Gently. Shalala in the morning. You do this. No, I can't do that. No, I'm try scared. it. Try it. No, I don't want to do No. that. Dad ke aage jeeta hai. Come on, Palli. Don't take a video doing that. No, I'll spoil it. take video. Natalia, you can do this. Lightly, gently, sir. More, Looks more, like the map more. of India. Checking his Supervising. supervising his dishwashing. You told me last time I need more oil. What That's else? why. Yeah, that's why. Aloo dum and aloo ka paratha and mango pickle. Mango pickle. So good. You eat it with ketchup? Mm. Indian achar, so be careful.
Not like your fancy pickle. You can wear mine if you No, I don't want to wear that. Colorful. Kunzang is going to get milk. He wants tea. Indian tea. Bye. पल्ली होते हो. चाय चाहिए थी आलू के पराठे के साथ. वो जल्दी से भाग के गया. मिल्क नहीं था तो इसलिए वो भाग के गया और लेके आया. You only have one job. Do this. So you can. Very nice. There's one more for Grandpa. He will be like, "Joy, moko bande. Isa hai." I want this. This A is big my cup. Oh, really? Yes. Yes, you don't touch that cup, okay? Queen Elizabeth's cup. Everything is perfect. I already finished one. तो ये पैकेज मैंने आज रिसीव किया और ये फाइनली इंडिया से भेजा गया है मुझे मेरे पेरेंट्स ने. यार क्या है ये, कैसे ओपन करूँ इसको मैं अब. 2,000 years later. फाइनली ऐसा कुछ दिखता है. और ये कड़ी पत्ता है. ओह इसमें आई थिंक मेरी मेडिसिन है. तो मेरे डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन लिखी थी इमरजेंसी के लिए, तो ये वही दवाइयाँ हैं. ओह इसमें पापा ने क्या भेजा है, तेज पत्ते. और ये है कसूरी मेथी, MDH कसूरी मेथी. वाह अब खाना और भी ज़्यादा मज़ेदार बनेगा. इसमें से खुशबू बहुत अच्छी आ रही है. ये है अजवाइन, आमचूर और हींग भी मुझे चाहिए. स्पेशली कहा था कि हींग मुझे एक ही चाहिए बस, तब भी मुझे पता था कि 2 ही भेजेंगे वो लोग. इलायची, ये साबुत गरम मसाला है. ये इसमें दालचीनी है कुछ और बड़ी इलायची और लौंग साथ में. कड़ी पत्ता इतना सारा. ओ माय गॉड. पता थी मुझे इतना ही भेजेंगे. 이용해 주셔서 감사합니다. 250-300 रुपए की एक गोभी. इंडिया में 10-20 रुपए की मिलती है. अब के हम गोभी के पराठे बनाएंगे. मुझे अच्छी लगती है गोभी आलू की सब्जी, स्पेशली पूड़ियों के साथ. जो मम्मी बनाती है गोभी वो अलग बनती है. ग्रेवी वाली बनाऊंगी जो कि मैंने कभी बनाई नहीं है, बट आज देखते हैं बना के. इसको तोड़ लेते हैं और इसमें देखते हैं कोई कीड़े वीड़े तो नहीं है. ज़्यादा नहीं बनाऊंगी सब्जी, कम बनाऊंगी क्योंकि मैं सोच रही हूँ कल आलू के गोभी के पराठे बनाए जाएं. इसे रख देते हैं, बहुत महंगी है. थोड़े गर्म पानी में इसको रख देते हैं ताकि ये थोड़ी धुल जाए अच्छे से, इसमें से कोरोना वगैरह हट जाए. हम अपनी ग्रेवी तैयार करते हैं. तो इस ग्रेवी के लिए प्याज की ग्रेवी बनानी है, तो प्याज को महीन नहीं कैसे भी काट सकते हैं. मिक्स कर लेते हैं. 2 हरी मिर्च, और लहसुन 1 2 3 4 5 6. और अब अदरक भी डाल दी मैंने इसमें. थोड़ा सा और सॉफ्ट होने देते हैं. नमक थोड़ा सा ताकि ये सब चीज़ें इसमें जल्दी गले. आई थिंक बस हो गया इतना. अब इसको बंद कर देते हैं. अब ये पानी सोख लेगा तो फिर हम आराम से फ्राई कर सकते हैं. थोड़ा बहुत ठंडा हो चुका है. अब इसको हम ट्रांसफर कर लेंगे अपने ग्राइंडर में. हम ज़्यादातर रेड प्याज यूज़ करते हैं. यहाँ पे वाइट मिलती हैं, बड़ी स्ट्रॉन्ग नहीं होती ज़्यादा जैसे लाल वाली होती हैं. अगर लाल वाली को काटो भी तो आंसू निकले आते हैं. यहाँ कुछ नहीं होता. इसको हम पीस के फिर हम पकाएंगे दोबारा. तो इसको मैं यहाँ रख देती हूँ. अब टाइम है गोभी को फ्राई करने का. हमारी गोभी ऐसी दिख रही है. इतनी सी. और अब आलू की बारी. मत देखिएगा, ये पहले का हो रहा है बट हमें फिक्स करना है ये. और इसको हम यहाँ रखते हैं अभी. हमारी हींग और ये खड़े मसाले, तेज पत्ता, इलायची, लौंग, दालचीनी, बड़ी इलायची, काली मिर्च, और ये हमारे पास आमचूर पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च और धनिया. और अब आता है हमारा सब्जी बनाने की तैयारी. सबसे पहले जीरा,
दूंगी नतालिया। और हींग भी डाल देती हूँ मैं भी, ज़्यादा नहीं, कम। और अब बारी आती है हमारे मसालों की। तो अभी हमें इसे पकने देना है थोड़ी देर, और फिर हम इसमें अपने मसाले मिलाएंगे। ये धनिया पाउडर, लाल मिर्ची, कैच, आई होप ज़्यादा तीखा ना हो जाए, हल्दी, बस। और आमचूर पाउडर। आमचूर मेरे घर में यूज़ नहीं होता, बट मैंने यहाँ मंगाया क्योंकि कभी कभी पराठे वगैरह के लिए ज़रूरत पड़ती है। नमक ऐड करते हैं थोड़ा स्वाद अनुसार, थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी मैं चीनी डालती हूँ उसमें बैलेंस करने के लिए, बस। अब इसमें अपनी गोभी मिलाते हैं सबसे पहले, और गोभी के बाद आलू। ज़्यादा थिक हो गई है, बस। और अब आटे की बारी। आटे के लिए हमारे पास आटा खत्म हो गया, तो फिर मैं कल ऑल पर्पस फ्लावर ले आई क्योंकि आटा मिला नहीं था, ख़त्म ही हो गया आटा। अब ऑनलाइन ऑर्डर करूँगी या फिर से ही तैवान जाना पड़ेगा। इस आटे में मैं थोड़ा सा नमक मिलाती हूँ। वैसे हमारे घर में आटे में नमक मिला के खाया नहीं जाता, बट थोड़ा सा मिलाते हैं, मैदा खाना पड़ रहा है। तो हमारा आटा लग चुका है, और अब इसमें धनिया डालने की बारी आ गई है। इसे छू लूं जरा, और थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करते हैं इसमें, ज़्यादा नहीं, बस खुशबू के लिए थोड़ा सा, बस। वाह, हमारी सब्जी बढ़िया दिख रही है। अभी तक तो मैंने टेस्ट भी नहीं किया ज़्यादा, भूख लग रही है मुझे। 1 2 3 4, राइट। इसको यूज़ करेंगे हम। आज हम नान बनाएंगे, रोटी नहीं। तो अभी कोशिश है मेरी कि पतली रोटी बनाऊं, पतली से पतली। अब इतनी ठीक है। और अब क्या करेंगे, मैं पानी लगाऊंगी इस पे, लाइक दिस, नान बनाने के लिए। पैन हमारा गर्म हो चुका है ताकि ये चिपके अच्छे से, और इसको मैं ऐसे पलट दूंगी। ला लो, ये चिपके क्यों नहीं? अच्छा, ये नॉन स्टिक है ना। अरे हमारा तैयार नहीं है ना ये। This is I made today. What is it? It looks so good. Aloo gobi sabji. Yes. Aloo gobi sabji. Never too much for dinosaurs like us. Natalia, this is for me. We don't have salad. Okay. And we eat like this in the dark. This is our meal for today. Aloo gobi ki sabji. And more chapatis. Okay. Let's see. Mukda. So good. I like it. Indian food, everything. Everyone. Bye. So today we came here to Foreign Food Mart with this lady. Superstar. Be careful. Hey guys, so we got so many things from our Foreign Food Mart. This is Indian tea. I don't know which tea, but it's tea. And then we have other things like atta and everything. And with that, we order from Halal, guys. I'm excited. This is my first time trying this. And beautiful view. And beautiful song. Beautiful view. This is super tasty. I've tried falafels before, but this one is super tasty. And they are so famous in America already. तो आज हमारा प्लान है, आज बाय द वे सर्दी बहुत ज़्यादा है बाहर, पता नहीं कितना टेम्परेचर, -9 -10। तो कल मैं और नतालिया इतेवान गए थे, वहाँ से अपने इंडियन इंग्रेडिएंट्स लेके आए, जैसे कि आटा। आज का प्लान है गोभी के पराठे बनाना। तो मैंने ऑलरेडी ये वाली गोभी जो बची थी इसको धोने के लिए रख दिया, फिर सुखाना होगा ताकि पानी पानी ना हो। और एक उसके साथ एक हरी मिर्च, धनिया, ऑफ कोर्स धनिया मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, अदरक और आधी प्याज। मैंने नतालिया को इस काम पे लगाया है। और जब तक हम आटा लगाएंगे, आई होप नतालिया आज कर ले। आटा लग चुका है, ऐसा कुछ दिखता है, बहुत टाइम लगाया मैंने। और नतालिया की प्रोग्रेस, नतालिया show yourself. Wow, are you enjoying yourself? Yes, of course. So much. So
This is her last cabbage. Yay! Finally, we have so much filling for our parathas. I already prepared coriander, onion, chili, and take it out some water from this. मैंने अदरक ऑलरेडी ऐड कर दिए, ग्रेट करा है उसे भी. अब इसमें डालते हैं सबसे पहले धनिया, प्याज और ग्रीन चिली. के बाद हम मसाले ऐड करेंगे. भुना हुआ जीरा सबसे पहले, ज़्यादा नहीं. लाल मिर्च, 10 मिनट. बहुत सारा धनिया पाउडर, कैच मसाला, 10. थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, आमचूर पाउडर थोड़ा सा. मैं अभी नमक नहीं मिलाया क्योंकि फिर गोभी पानी छोड़ने लगती है. थोड़ी सी हींग भी मिला देती हूँ, थोड़ी सी. अब इसमें नमक मिला ही देते हैं क्योंकि अब टाइम है ही बनाने वाला. फर्स्ट पराठा. I never made this paratha before. Process the same. Hello, are you Momo? Hello, Momo. Okay, really gently. Eee, stop it. Whatever. Today we are using butter. Thank you. Oh my god, it's too much. And now everything is clear. And we are waiting for our tea. 2 parathas for me. That's it. And then what else? Chai. Alright. Gobi aloo sabji. Perfecto. Which one you like the most? Aloo or gobi? I like both. It's good. Texture is different too. Yeah. It's so fatty. I need my aam ka achar with my aloo ka paratha. This gobi ki sabji is so good. How's your gobi ka paratha going on? It's so delicious. I love it so much. Which one you like the most? Aloo or gobi? Oh, this one is less like heavy for my stomach. Yeah. But the other one is like tasty too.